अब हम लोग एक और ट्रांजिस्टर ले लेंगे और उसका इमीटर पॉइंट हम लोग बेस पॉइंट से सोल्ड कर लेंगे। और हम लोग 10K का रजिस्टर ले लेंगे, उसको बेस पॉइंट से ट्रांजिस्टर के और कलेक्टर पॉइंट से सोल्ड कर लेंगे। और अब हम लोग कैपेसिटर ले लेंगे, कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम लोग ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट से सोल्ड कर लेंगे। और अब हम स्पीकर का माइनस वाला पॉइंट कलेक्टर पिन में सोल्ड कर लेंगे ट्रांजिस्टर के। अब हम लोग स्पीकर का प्लस वाला वायर ले लेंगे और कलेक्टर पिन में सोल्ड कर लेंगे ट्रांजिस्टर के। अब हम लोग ऑडियो ऑक्स केबल ले लेंगे और कैपेसिटर पे सोल्ड कर लेंगे और एक इमीटर पे सोल्ड कर लेंगे। अब हम लोग 3.7 वोल्ट का बैटरी या 5 वोल्ट का पावर सप्लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम लोग कलेक्टर पिन में पॉजिटिव वायर सोल्ड कर लेंगे और नेगेटिव हम लोग इमीटर पे सोल्ड कर लेंगे। मैं 5 वोल्ट USB पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। ये हम लोग का सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सर्किट को देख लेते कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। बाबा नहीं
दोस्तों आप सोच रहे होगे कि हम लोग ने जो एम्पलीफायर बनाया उसका जो स्पीकर का आउटपुट है वो फटाफट आ रहा है, तो आप बिल्कुल सही है। ये इस कारण आ रहा है क्योंकि मैंने इसमें 6 वोल्ट का बैटरी यूज़ किया है, 12 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ नहीं किया है, इस कारण ये ऐसे फटाफट फट के आ रहा है आवाज़। अगर आप 12 वोल्ट का कोई भी पावर सप्लाई यूज़ करेंगे तो जो आवाज़ है काफ़ी स्मूथ आएगा बिना फटे हुए। और अगर आपको इसका सर्किट डायग्राम चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने अपने वेबसाइट पर आर्टिकल लिखा तो आप उसको पढ़ सकते हो, तो आपको आसानी हो जाएगा ज़रा एम्पलीफायर बनाने में। चाहे तू तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तेरी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा।
The Bluetooth device is ready to pair. वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, लाइक हम रखते हैं 50 लाइक, तो फटाफट से कंप्लीट कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। शादी करने बोले पल्लू बन जाऊंगा।